Hello everyone. Today is lecture 2 पावर सिस्टम स्टेबिलिटी. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पावर सिस्टम स्टेबिलिटी. उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द पावर फ्लो इन अ सिंगल फेज लाइन और डायनेमिक्स ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन. लेट्स स्टार्ट. द पावर फ्लो. हमने यहाँ पे एक सिंगल फेज लाइन के सर्किट को कंसिडर किया है. इस लाइन में एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस सीरीज़ में लगे हुए हैं. यहाँ पे जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है दैट इज़ V1 एंगल डेल्टा, रिसीविंग एंड वोल्टेज है दैट इज V2 एंगल 0 डिग्री, एंड जो रिसीविंग एंड करंट है दैट इज़ I एंगल फाई, और जो इम्पीडेंस है दैट इज़ Z एंगल थीटा दैट इज इक्वल्स टू R प्लस JX. अगर हमें यहाँ पे करंट निकालना है तो जो करंट होगा वो होगा सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द लाइन. तो वो है I इक्वल्स टू V1 एंगल डेल्टा माइनस V2 एंगल 0 अपॉन Z एंगल थीटा. हमने इसको एक्सपेंड कर दिया V1 अपॉन Z एंगल डेल्टा माइनस थीटा माइनस V2 ओवर Z एंगल माइनस थीटा. नाउ पावर रिसीव्ड हमने माना है P2 एंड दैट इज इक्वल्स टू रियल V2 I स्टार. अब हम यहाँ पे I की वैल्यू ऊपर से उठा के रख देंगे, और चूँकि I स्टार है तो हम इसको कॉन्जुगेट कर देंगे. जो थीटा है वो जो है प्लस हो जाएगा नीचे वाली इक्वेशन में, तो हमें P2 मिलेगा रियल वैल्यू ऑफ V2 V1 अपॉन Z एंगल थीटा माइनस डेल्टा माइनस V2 ओवर Z एंगल थीटा. अब हम इस एंगल वाली टर्म को कॉज और साइन में ब्रेक करके सिर्फ रियल पार्ट लेंगे तो फिर कॉज लेंगे, इसलिए P2 हो जाएगा V1 ओवर V2 ओवर Z कॉस थीटा माइनस डेल्टा माइनस V2 स्क्वायर अपॉन Z कॉस थीटा. ओके, नाउ लेट थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस एल्फा, और ऊपर वाली इक्वेशन में हम थीटा की जगह पे 90 माइनस एल्फा पुट कर देंगे. और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो वो भी यहाँ पुट करके जो हमें P2 मिलेगा वो मिलेगा V1 इंटू V2 अपॉन Z साइन एल्फा प्लस डेल्टा माइनस V2 स्क्वायर अपॉन Z साइन एल्फा. दैट इज आर इक्वेशन नंबर 2. Now you know alpha is a function of impedance of the line, so the P2 received is maximum when alpha plus delta is equals to 90 डिग्री. और आप इसमें से डेल्टा इज इक्वल्स टू 90 माइनस एल्फा भी ले सकते हो. अब हम पिछली वाली वैल्यू में डेल्टा की वैल्यू 90 माइनस एल्फा रखेंगे तो हमें मिलेगा P2 मैक्स इक्वल्स टू V1 V2 ओवर Z माइनस V2 स्क्वायर अपॉन Z साइन एल्फा. अब ये साइन एल्फा इज इक्वल्स टू R अपॉन Z रखेंगे और Z इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रखेंगे, तो जो इक्वेशन मिल जाएगी वो हमें ये मिल जाएगी. अब इस इक्वेशन में हम V1 इक्वल्स टू V2 रखेंगे तो हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 3. अब इस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जैसे हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं उसी टर्म में हम P2 मैक्स के लिए मैक्सिमा निकालेंगे. उसके लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x की टर्म में और 0 के इक्वेट कर देंगे. तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4R स्क्वायर, और यहाँ पे जो x है x इक्वल्स टू अंडर रूट 3R. दैट इज़ आर इक्वेशन नंबर 4. This equation shows that the maximum power can be transferred from end 1 to end 2 when the reactance of the line is under root 3 times its resistance. Normally, the reactance is quite large as compared to the resistance. अब ये इक्वेशन ये भी शो करती है कि it is not desirable to compensate by series capacitance for all the reactance. Also, it is clear that power can be transferred only if reactance is present. In case reactance is 0, power cannot be transmitted. Okay. Now, for a lossless line, if we put R equals to 0, then we get the power transmitted P2 equals to V1 into V2 over X sin delta. Here, in this equation, the power transmitted depends upon the system reactance and the angle between the two rotors, that is angle delta. So the curve drawn between P2 and delta is known as power angle curve, as you seen on right side of the screen, that is power angle curve. The maximum power transmitted is given by Pm is equals to V1 V2 over X. यहाँ हमने क्या किया है कि फॉर अ गिवन कोई भी V1 और V2
और x के लिए ये जो इट्स अकरेंस एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. Okay, the torque angle delta is positive for generator action and negative for motor action. In case of generator action, the rotor advances in the direction of rotation, whereas for motor action, the rotor retards or fall back opposite to the direction of rotation. The maximum value of power transmitted can be varied by varying what? V1, V2 and X. The system is stable if and only if for an increase in rotor angle delta, the transmitted power also increases. Okay, this is all about the power angle and the power flow in a single phase transmission line. Now, second is dynamics of synchronous machine. As you've seen, the kinetic energy of a rotor at synchronous machine is Ke denotes kinetic energy, half J omega Sm square into 10 की power minus 6 megajoules, where J equals to what? Rotor moment of inertia in kg meter square. And the omega Sm equals to synchronous speed in rotor mechanical per second. But omega S equals to what? P by 2 omega Sm, where ओमेगा एस इक्वल्स टू क्या है? रोटर स्पीड इन रेडियन इलेक्ट्रिकल पर सेकेंड एंड पी इज व्हाट? नंबर ऑफ मशीन पोल्स. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एस in above equation and we get K is equals to half m omega s, where m is equals to J bracket 2 by p square omega s into 10 की power minus 6. This is called the moment of inertia in megajoules per electrical radian. We shall define the inertia constant h such that gh is equals to Ke half m omega s megajoules, where G is what? Machine rating, base rating है in MVA for the 3 phase, and H is inertia constant in megajoule per MVA. Okay, it immediately follows that M is equals to 2GH upon omega S equals to GH upon pi F megajoules per electrical radian. अब यहाँ पे आप पाई को 180 से रिप्लेस कर दीजिए, then we get this next equation where m is also called the inertia constant. अब हम g को बेस ले लेंगे, so the inertia constant in per unit is m per unit h upon pi f. अगेन हम पाई को 180 कर देंगे. ओके, तो द inertia constant h has a characteristics value or a range of values for each class of machines. Okay, now we talk about the swing equation. What is this? As you seen in the figure, this shows the torque, speed and flow of mechanical and electrical power in synchronous machine. It is assumed that the windage, friction, iron loss, torque is negligible. The differential equation governing the rotor dynamics can be written in the form of equation 1, that is J d2 theta m dt square equals to Tm minus Te Newton meter, where is theta m is what? Angle in radian, mechanical angle. Tm is what? Turbine torque in Newton meter. It acquires a negative value for a motoring machine. Te is equals to electromagnetic torque developed in Newton meter, and it also acquires a negative value for a motoring machine. While rotor undergoes dynamics as per the equation 1, the rotor speed changes by insignificant magnitude for the time period of interest 1 second. Equation 1 thus further can be converted into its more convenient power form by assuming that rotor speed is to remain constant at synchronous speed, that is omega Sm. So now we are multiplying both side of equation 1 by omega Sm, and we can write the equation 2, where
PM equals to mechanical power input in megawatt and P is equals to electrical power output in megawatt, where stator copper loss is assumed negligible. Now from equation 2, we get the equation where theta is angle in radian electrical, or we can write this as m d2 theta I upon dt square is equals to Pm minus P. This is our equation 3. It is more convenient to measure the angular position of the rotor with respect to synchronously rotating frame of reference. Let delta is equals to theta I minus omega st, rotor angular displacement from synchronously rotating reference frame, or this is called torque angle or power angle. Okay, this is our equation 4. From equation 4, we get the next equation by differentiating with respect to t, that is our equation number 5. Hence equation 3 can be written in the terms of delta as well, so that we can get the equation 6. We know that m is equals to gh upon pi f, so we put the value of this in equation 6 and we get the equation number 7. Now dividing throughout by G, the MVA rating of machine, we get M per unit d2 delta upon dt is equals to Pm minus P in per unit of machine rating as base. It is our equation number 8, where M per unit is equals to H upon pi F, or we can put the value of M per unit in the above equation and we get the equation number 9. Here equation number 8 and 9 is called the swing equation. It describes the rotor dynamics of a synchronous machine, either generating or motoring mode. It is a second order differential equation where damping turn is absent because of the assumption of a lossless machine and the fact that the torque of damper winding has been ignored. This assumption leads to pessimistic result in transient stability analysis, that damping helps to stabilize the system. Now this is all about the swing equation. Now for multi-machine system. In a multi-machine system, a common system base must be chosen. Let GMACH, G mechanical equals to machine rating, base rating. G system is system base. Now equation 9 can be written as G mechanical upon G system in a bracket H mechanical upon F d2 delta upon dt square equals to Pm minus P G mechanical upon G system, or you can write this equation in the form of this H system upon pi F d2 delta upon dt square equals to Pm minus P per unit in system base, where H system is equals to H mechanical G mechanical upon G system. That is called machine inertia constant in system base. Now if machine swinging coherently means two rotors swing coherently side by side. Consider the swing equation of two machines on a common base. Equation number 10 and equation number 2. There is only one difference in equation number 10 and 2, that in the 10 the notation is 1 for machine 1 and 11 the notation is 2 for machine 2. Since the machine rotor swings together, so delta 1 equals to delta 2 is equals to, we have considered it delta. Now adding equation 10 and 11, we get the equation number 12, where Pm is equals to Pm1 plus Pm2, P is equals to Pe1 plus Pe2, and H equivalent equals to H1 plus H2. That is our equation number 13. So as it is, the two machines swinging coherently are thus reduced to a single machine as in equation 12. The equivalent inertia in equation 13 can be written as H equivalent equals to H1 mechanical into G1 mechanical upon G system plus H2 mechanical into G2 mechanical upon G system. That is our equation number 14. The above results are easily extendable to any number of machines swinging coherently. It may be 2, 3, 4 and so on. So this is all about today.